Hello students, welcome to online classes. Today our topic is reflection of light, which is taken from 10th class physics first chapter, that is light reflection and refraction. Without wasting a time, let's begin with the topic. So what is light? Light is a form of energy which enables us to see the object from which it is come. For example, we are able to see a marker with the help of light. For example, the sun, which gives out light, therefore we can see the sun. Example, the objects like sun, lamp, candle, which emits their own light are known as luminous objects. So what is luminous objects? The object which have their own light. For example, candle, sun, lamp. And these objects are known as luminous objects. So what do you mean by non-luminous object? Non-luminous objects are the objects which do not have their own light. For example, whiteboard, marker, pencil, notebook, chair, all are non-luminous objects. Non-luminous objects are the objects which do not have their own light. But we can see the non-luminous object. How we see the non-luminous object? With the help of luminous object. Luminous object, the light of luminous object fall on a non-luminous object and reflect it back, and we can see the you have to memorize that light have dual nature, that is both wave as well as particle nature. All of you were discussed in detail both wave as well as particle nature in 12th class first chapter, that is optics. Before starting the reflection of light, you should know the meaning of some terms, that is incident ray, reflected ray, normal and point of incidence. So what is incident ray? Incident ray, let us suppose we have take here an object. Let us suppose we take a mirror which is polished from one end. This is a plain mirror. This is polished surface and this is the reflecting surface of mirror. This is reflecting surface of mirror and this is polished surface of mirror. So what is incident ray? Incident ray, the ray which fall on an object. The ray of light which is fall on an object is known as incident ray of light. Let us suppose here sun emits the light. Let us suppose we have take here only one single ray. The ray of light which fall on an object. ऐसी लाइट जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेगी उस रे ऑफ लाइट को कहते हैं इंसिडेंट रे. इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. The ray of light which is fall on a mirror, plain mirror, is known as incident ray. So next is point of incidence. Point of incidence means the point at which incident ray fall on a mirror. The ray, point of incidence means इस point को कहते हैं point of incidence. The point at which the incident ray fall on a mirror. Incident ray कौन से point पे fall करेगी mirror के ऊपर? इस point पे. इस point को कहेंगे point of incidence. Incidence. So what is reflected ray? The ray which is sent back. अब इस पे रिफ्लेक्ट होगी तो सम ऑब्जर्व होगी और मैक्सिमम प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में मैक्सिमम रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो द रे ऑफ लाइट व्हिच सेंड बैक्स, द रे ऑफ लाइट व्हिच सेंड बैक्स इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. This ray is known as reflected ray. So here in this figure one normal is there. Normal means the perpendicular to the point of incidence. जब हम point of incidence से perpendicular ड्रा करेंगे उस point of incidence से उसको हम कहेंगे normal. This is known as normal. So you have to memorize these four basic terms, that is incident ray, point of incidence, reflected ray and normal. What is incident ray? The ray of light which is fall on a mirror, or we can say the ray of light which is fall on an object. ऐसी लाइट जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल कर रही है उस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे. तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं द पॉइंट एट व्हिच द इंसिडेंट रे फॉल. ऐसा पॉइंट जिस पे इंसिडेंट रे फॉल कर रही है तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे? The ray which sent backs. ऐसी रे जो बैक होके वापस जा रही है, एरो रिप्रेजेंट कर रही है बैक होके जा रही है, is known as reflected ray. And what do you mean by normal? When we draw perpendicular from point of incidence is known as normal. So what do you mean by reflection of light? Reflection of light means the sending back of light when the ray of light fall on an object. वो लाइट जो वापस जा रही है वो कब जाएगी वापस? जब रे ऑफ लाइट इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी. The bouncing back of light, बैक होके वापस आ रही है लाइट. The bouncing back of light when ray of light fall on an object. This process is known as reflection of light. I hope you are getting my words. What do you mean by reflection of light? Reflection of light means वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है. Reflection of light means when ray of light fall on an object, the light which reflect backs, and the whole process known as reflection of light. The bouncing back of light when ray of light fall on an object, or we can see that fall on a mirror, is known as reflection of light. Now we discuss the laws of reflection. So there are basic two laws of reflection here. First laws state the incident ray, reflected ray and normal lies on a same plane. Incident ray, reflected ray and normal lies on a same plane, which means if I rotate the whiteboard like this, अगर मैं व्हाइट बोर्ड को रोटेट करता हूं ऐसा नहीं होगा रिफ्लेक्टेड रे व्हाइट बोर्ड से बाहर आ जाएगी, वो तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही रहेगी. इट मींस ये तीनों जो होंगे एक ही प्लेन में होंगे. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. Second law of reflection state the angle of incidence. So what do you mean by angle of incidence? Angle of incidence means angle between incident ray and normal. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फाउंड हो रहा है, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस? मैंने एंगल लाइन लिखा है यहां पे. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल फाउंड हो रहा है, ये वाला, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन.
सो ये बेसिक 5 टर्म्स हो गई हैं यहाँ पे। अब इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, point of incident, the point where incident ray fall is known as point of incidence. What do you mean by reflected ray? The ray of light which sent back is known as reflected ray. Normal, which is perpendicular to the point of incidence. And what do you mean by angle of incidence? The angle between incident ray and normal. ये incident ray हमारे पास, ये normal, इन दोनों के बीच में जो angle है होगा हमारे पास होगा angle of incidence. What do you mean by angle of reflection? Angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection. So first last state, incident ray, reflected ray, normal is on same plane, that is plane. Second last state, angle of incidence is always is equal to angle of reflection. That is angle I is always equal to angle R. Angle of incidence हमेशा angle of reflection के equal होता है. Let us suppose आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है the angle of incidence is 30 degree. What is the angle of reflection? You should say the angle of reflection is also 30 because laws of reflection state angle of incidence is always equal to angle of reflection. If angle of incidence is 30 degree, then angle of reflection is also 30 degree. If angle of reflection is 40 degree, then angle of incidence is 40 degree according to laws of reflection. I hope you are getting my words. So what do you mean by reflection of light? Reflection of light means the bouncing back of light. When? कब होगी back light? When ray of light fall on an object. जब ray of light से object के ऊपर पड़ेगी. तो मैंने यहाँ पे object लिया हुआ है mirror, plain mirror लिया हुआ है मैंने यहाँ. Is known as reflection of light. There are basic 2 laws of reflection of light. So first law, the incident ray, reflected ray and normal lie on a same plane. Which means if I rotate the whiteboard, the reflected ray will remain on the whiteboard. ये बाहर नहीं आ जाएगी या inward नहीं चली जाएगी. मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे. सेकंड स्टेट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. अगर आपको एग्जाम में एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया होता है तो रिफ्लेक्शन भी सेम ही होगा. व्हाट हैपन व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस ऑफ मिरर? हियर वी डिस्कस्ड. लेट अस सपोज इट इज अ मिरर. लेट अस सपोज रे ऑफ लाइट दैट इज इंसिडेंट रे फॉल परपेंडिकुलरली ऑन अ मिरर. दैट इज लाइक दैट. सॉरी, लाइक दिस. Here incident ray fall if ray of light fall perpendicularly on a mirror. तो नॉर्मल कैसे ड्रा करेंगे हम यहाँ पे? नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर होगा, यही वाला नॉर्मल होगा. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी यही है. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंट भी यही है, नॉर्मल भी यही है. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास कितना होगा यहाँ पे? 0 डिग्री. आई होप यू आर गेटिंग माय वर्ड्स. यहाँ पे इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर फॉल कर रही है तो नॉर्मल भी तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही हमारे पास. नॉर्मल भी तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर होता है, इट मींस उसी के ऊपर ही आएगा. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है. तो यहाँ पे इंसिडेंस रे और नॉर्मल एक ही लाइन है तो इट मींस एंगल आई माइनस कितना हो जाएगा? 0. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? जितना एंगल आई उतना ही एंगल आर. एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इट मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0. You have to memorize that whenever ray of light, that is incident ray, fall perpendicular on a mirror. In this case, angle of incidence and angle of reflection is always 0. I hope you understand this topic. Thank you for watching. Have a nice day.